हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रेन बाइट पाइथन सीरीज। मैं मयंक हूँ एंड आज हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, दैट इज पाइथन ऑपरेटर्स। सो ये टॉपिक काफ़ी छोटा लगता है पर बिना ऑपरेटर्स के कोई भी कोड चल ही नहीं सकता, राइट। चलो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ऑल द कंसेप्ट हियर। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो वैल्यूज या वेरिएबल्स के बीच ऑपरेशन करते हैं। सो जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं लैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वैसे ही पाइथन में भी सिमिलर ऑपरेटर्स होते हैं। सो और जिन पे ये ऑपरेटर्स काम करते हैं वो हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, इफ आई से 5 + 3, सो इसमें जो ये प्लस साइन है दैट इज ऑपरेटर and the 5 and 3s are operands, right? So this will give a value of 8. So likewise ऐसे ही ऑपरेटर्स काम करते हैं इन पाइथन। सो ऑपरेटर्स के मेजर टाइप्स है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। सो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। सो ये सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेशंस है। ये नंबर्स के साथ मैथ स्टाइल्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो इफ आई हैव अ वैल्यू ऑफ ए एज एंड बी एज 3, सो इसमें मैं डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकता हूँ यूजिंग ऑपरेटर्स। सो लेट मी जस्ट पुल दैट to save the time. So as you can see, I can perform addition here by using plus operator, subtraction using minus, and likewise all other. Division के लिए हम division operator use करते हैं, but floor, to give a floor division we use double slash kind of thing. So इसका मतलब है it will return only the integer part. And using modulus operator you can have the remainder, वो क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न कर देता है, राइट। एंड टू यूज like power operators we use double this kind of star operators to make it as in power, right? So as you can see here, addition करोगे तो 5 + 3 8, subtraction 2, multiplication 5 into 3 is 15, division, so 5/3 is 1.66, right? So it will give you an floating point division, right? To get the integer part from here you can use this floor division, right? And for modulus part, 5/3 का अगर like 5 divided by 3 करोगे तो उसका रिमाइंडर आएगा like 2, right? So it will give this percentage sign is given as modulus operator, and to get the power we use double this star kind of thing, right? So this was all about arithmetic operators in Python. Next thing is comparison operator. So let me just write that. If I have values like these 5 and again 5 and same example 5 and 3, right? So मुझे compare करनी है value. So इसमें हम different operators use करते हैं. Let me just pull that. So we use this greater than symbol. This is the less than symbol. This is greater than equal to operator. This is less than equal to operator. This is equal to check if those numbers are equal, and this is not equal to operator, right? So to give an example, when I say x, इसका मतलब ये है कि क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, right? So it will return in the format of true and false, right? The next thing is क्या x की वैल्यू y से छोटी है, and similarly all other things, क्या x की वैल्यू बड़ी या बराबर है, and the छोटी and बराबर, right? So this, by using this we can compare two values. Let me just run this. So you can see here, uh, since 5 is greater than 3 it will return true. 5 is not less than 3, right? So it will return false here. Is 5 is equal to 3? Not. That is why it is returning false here. So likewise we can use these kind of operators. This is a kind of comparison operators commonly used in if statements. So for example, to check if a student's marks are above 40, then we will mark it as a pass, or if it's less than 40 then it is fail, right? So it is commonly used in if statements. नेक्स्ट थिंग इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आते हैं जब आपको मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करनी हो, राइट? सो टू गिव एन एग्जांपल, लेट मी जस्ट राइट, इफ
A is true and B is false. So let me just pull those operators here. If I want to see and logical operator here in A on A and B, so I can use this line. So इसका मतलब and use करने का मतलब है दोनों true होने चाहिए, then it will return true. If any of them is false, then it will return false here. Okay. और operator ऐसे काम करता है कि if any of them is true, then it will return true, right? And if both of them are false, then it will return false, right? Then the not operator is just उसका उल्टा कर देता है. So if I perform not a, तो इसका भी value true है, then it will go as false, right? So let me just run this. So as I said, any of them is false, then it will return false, true, and false, right? So this was the and like logical operator here. So इसका use to give an example, if condition में हम इसको use ऐसा करेंगे, right, to mark it as eligible person. So इसको हम eligibility criteria में भी यूज कर सकते हैं. If age is greater than 18 and is if the country is India. So अगर वो बंदा अगर इंडिया में रह रहा है, अगर उसका एज इज ग्रेटर देन 18, सो उसकी अपन एलिजिबल मार्क कर देंगे इन सम हाइपोथेटिकल सिनेरियो, राइट? सो बाय यूजिंग logical operator and here we can perform various operations, right? So this was all about logical operations like operators. um, Let me just give you a kind of summary table here. राइट, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे लिस्टेड है कि प्लस माइनस एडिशन लाइक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लो डिवीजन. Math operators operations are performed using these operators. Comparison operators are given here and logical, and to combine various conditions we use logical operators, right? So I guess this was all about operators in Python. So आज हमने सीखा Python के सबसे important building blocks, that is operators. सो चाहे आप कैलकुलेटर बना रहे हो, कोई डिसीजन लॉजिक लिख रहे हो, या मशीन लर्निंग का कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हो, राइट? ऑपरेटर्स हर जगह यूज होते हैं. सो नेक्स्ट लेसन भी हम ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ चालू करेंगे. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, नोटबुक को रन करो, डाउनलोड करो. आई विल गिव, like I say, I will give you this notebook in a formatted better version. You can download that from the description. So this is Mayank signing off from BrainBite. Keep learning and keep growing.